Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज हम एक्सरसाइज 4 भी करिए क्वेश्चन नंबर 9 to 11 पर, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमें प्रीवियस वीडियो रे कंप्लीट कर सारछु। अब यार जो चैप्टर एते सब वीडियो हलान वीडियो 1 रे हमें करसले सब बेसिक कांसेप्ट्स एंड डेफिनेशन। वीडियो 2 रे हमें करले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विथ ऑपरेशंस एंड 3 4 5 6 एंड 7 8 8 रे हमें कौन कले 3 4a एक्सरसाइज 4a सॉल्व कले। नाउ क्वेश्चन 9 10 और 11 8 रे हम कौन करियो एक्सरसाइज 4b सॉल्व कले। 8 रो 4b रो क्वेश्चन नंबर 10 हां 9 पर 10 पर हम आज सॉल्व कर, ठीक है। या पूर्व हमर जो तीनटा चैप्टर हिची से चैप्टर गुडा कहला एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग। यार जेई लेक्चर नाही प्ले काई ना यार जेई क्वेश्चंस हां जेई एग्जाम रे आसे ता पूर्व हेतले आईटीएफ माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एथरे हमर सब वीडियो सहित जेई वीडियो मध्ये अछि जेई रो 2019 20 21 22 रो सॉल्व। देन रिलेशंस एंड फंक्शन रो मध्ये वीडियोस अछि। हमर सीएचएस रो पूरा बुक रो सॉल्यूशन अछि ता सहित यार जेई लेक्चर मध्ये अछि। यार मध्ये एक्सरसाइज 4 भी सरला पर मध्ये हम यार जेई लेक्चर नै आसी 19 2019 2020 और 2021 ये पॉसिबल 2022 काई ना 2022 क्वेश्चन मिल लाले टिके लेट हिजो तो हमें पर अपलोड करबी जदी मिल गला संग संग कर, ठीक है। तो एटा हे गेला हमर। और जदी मोर वीडियो को नुआ रे वीडियो को नुआ देखियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। और एथरा हम कोन कोन मिलियो हमर ऐप टा डाउनलोड कर दे तार लिंक को डिस्क्रिप्शन रे दे दे। ऐप रा हम कोन कोन मिलियो दे ऐप रा हम मिलियो 2018 रो स्टार्ट करबी 2022 पर्यंत सबु सीएचएसई मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर रो वीडियो सॉल्यूशन या सहित ओडिशा जेई पिला मानन पाई ओजेई पिला मानन पाई हमें ओजेई गोटे सीरीज बनेछु सेत्र बहुत गुडे वीडियो छै सेगुडा आपण देख परिबे। या पर ईच चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाई हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन करछु। आ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट है एमसीक्यू और हमर गोटे सीरीज अछि जोथरे हम अराउंड 1000 प्लस एमसीक्यूज हम डिस्कशन करछु थ्रू डिफरेंट वीडियोस। ए सब आपन को हम ऐप रे मिल जो एब्सोल्युटली फ्री। सीएचएसई बोर्ड को जिवे हमर सीबीएसई बोर्ड मध्ये चैनल अछि तो सीबीएसई बोर्ड मध्ये हमर वीडियो आछो महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये हमर वीडियो आछो। सो आपन मानन पय जो माने ओडिसा रो अछि से मानन पय ओडिसा वीडियो देखबे सीएचएसई बोर्ड को जिवे सीएचई बोर्ड एंड ओडिया बोर्ड ओजी पय जो वीडियो गुडा अछि एगुडा आपनकर रिक्वायरमेंट रे वीडियो आइछ मध्ये बहुत गुडे वीडियो हम अपलोड करछो एंड स्टिल द वर्क इज गोइंग एंड विल do the good work for you people provided you also raise your hand to help Krishnas Maths। बेल आइकन को प्रेस करथियो और सांग साथी मन कहउथि से माने भी वॉच करिवे वीडियो so that everybody will be getting benefited from this। Now we'll start our video which is 4b exercise 4b and question number 9 onwards। So let's start। Expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matter। देखो यदि a गोटे वीडियो अछि if a is a matrix then a plus a transpose is always symmetric। This is always a symmetric matrix and a minus a transpose is always a skew symmetric matrix। This is always a skew symmetric matrix। So दुटा जाको ऐड कर देले हमको मिलिबो a which is equal to half of a plus a transpose plus a minus a transpose। So this is how you can express any square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। एटा होछ तार फार्मूला। एबे आंसर डिस्कशन करियो। लेट अस कंसीडर द गिवन मैट्रिक्स एज मैट्रिक्स A। यदि मैट्रिक्स A अछि फाइंड आउट A ट्रांसपोज। So A transpose will be equal to first row will become first column 1 2 3, second row will become second column which is 4 0 1 and third row will become third column -1 5 and -2। So this is A transpose। Now A plus A transpose is equal to 1 plus 1 is 2, 2 plus 4 will be 6, 3 minus 1 will be 2, then 4 plus 2 will be 6, 0 plus 0 is 0, 1 plus 5 will be again 6, then -1 plus 3 will be 2 and 5 plus 1 will be 6 and -2 will be equal to -4।
So this is your A plus A transpose. Let us consider this as P and Q equal to, suppose A minus A transpose. A minus A transpose. Now look, P transpose equal to 262 and 606, 26 minus 4. So therefore P equal to P transpose. Since P equal to P transpose, therefore P is symmetric. P is symmetric. Similarly, Q is equal to A minus A transpose, which is equal to A minus. A dutal minus 1 minus 1 is 0. 2 minus 4 is minus 2. 3 plus 1 will be 4. 4 minus 2 is 2. And this is 0 minus 0. 1 minus 5, which is minus 4. Minus 1 minus 3. 5 minus 1 will be 4, and this is 0. Now, when you find Q transpose, this will be equal to 0 minus 2, 4. 2, 0 minus 4. And minus 4, 4 and 0. This is Q transpose. Therefore, minus Q transpose equal to, minus Q transpose equal to 0 minus 2, 4. Minus 2 plus 0 minus 4 and minus 4, 4 and 0. This is Q transpose. This is Q transpose. So Q equal to minus Q transpose. Q equal to the Q or Q minus Q transpose. It is say Q is equal to minus Q transpose. That is Q is skew symmetric. That is Q is skew symmetric. Therefore, A can be written as P plus Q, P plus Q, and where P equal to A plus A transpose into half. So every matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. सबू एमती कर जो मैट्रिक्स गिवन अछि ताको A नाम तारा A रो ट्रांसपोज बाहर करो दुईटा जाको ऐड करियो P करियो दुईटा जाको सबट्रैक्ट करियो Q करियो देन प्रूफ कर दो सेटा को तारा ट्रांसपोज बाहर करियो कि one is your symmetric and the other one is your skew symmetric matrix. Then A is equal to half of P plus Q. Next, ये सबू सेम ये ऑल है मु गोटे गोटे क्वेश्चन करियो गोटे गोटे आपन मानक देबी सॉल्व करियो एटा कर दो let this is equal to A. So let us find A transpose. कौन फाइंड करियो यार A transpose फाइंड करियो तो A transpose is equal to X A B A Y C B C and Z. This is your A transpose. Now A plus A transpose equal to X plus X will be 2X. A plus A will be 2A. B plus B will be 2B. A plus A is 2A. Y plus Y 2Y. C plus C 2C. B plus B 2B. C plus C 2C. And the Z plus Z will be 2Z. Let this is A. This is A. Now P transpose बाहर करो. P transpose कहता है सो again 2X 2A 2B then 2A 2Y 2C 2B 2C 2C. देखो ए दुटा वैल्यू इक्वल ए दुटा वैल्यू इक्वल ए दुटा वैल्यू इक्वल मतलब P डैश इज सिमेट्रिक. P डैश इज सिमेट्रिक हेगला P डैश सिमेट्रिक हेगला एबे कोन कहियो A minus A transpose बाहर करियो the value of A minus A transpose equal to कौन होगा X minus X हेगला 0 A minus A हेगला 0 B minus B is 0 A minus A 0 Y minus Y 0 C minus C 0. This is 0 this is 0 and this is 0. So this is a 0 matrix and 0 matrix is always skew symmetric. So let us consider this as Q. So Q is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Therefore, P plus Q divided by 2 equal to A. This is how you can express it, out of which one of them is a 0 matrix. एथरु गोटे हेगला तमरो 0 मैट्रिक्स तो जे एमसी भी लिखिबार अछि हाफ ऑफ P मैट्रिक्स कोन 2x 2a 2b 2a 2y 2c 2b 2c and 2z plus Q will be your 0 matrix. Q is your 0 matrix multiplied by 1 by 2.
So this is how you can express any matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. And the second one I'm giving you as homework. You can do by your own as 1 and 3. Again the fourth one. Let A is equal to 0x minus x and 0. Let us find out A transpose. A transpose equal to 0x minus x and 0. Now let us find the value of A plus A transpose. This is 0, 0, 0 and 0 here. Let this will be P. So P transpose is equal to the same. So P equal to P transpose, therefore P is symmetric. P is symmetric. Now A minus A transpose will be equal to 0, 2x minus 2x and 0. Here this will be equal to Q. Therefore Q transpose is equal to 0, 2x minus 2x and 0. So therefore Q is a skew symmetric matrix. Skew symmetric. Since this is equal to minus Q, it is a skew symmetric matrix. Rectangular skew symmetric matrix. Therefore A can be written, let this be equal to A. So A can be written as half of P plus Q, where one of them is a 0 matrix, which is your symmetric matrix. It is the same thing. So this I will give you as a home. Then it is the same much mu gote karibi gote homework. Let A equal to 4 minus 3, 1 and 2. So what about A transpose? A transpose equal to 4 minus 3, 1 and 2. Now add these two. So this is A plus A transpose equal to 4 plus 4 is 8 minus 2 minus 3 plus 1 is minus 2. 1 minus 3 is minus 2 and 2 plus 2 will be 4. So this is, let this will be equal to P. So find out P transpose to check whether P is symmetric or not. So this is 8 minus 2 minus 2, 4, and this is same. Since P equal to P transpose, therefore P is symmetric. P is symmetric. Now about A minus A transpose. A minus A transpose equal to 0. 4 minus 4 is 0. Minus 3 minus 1 will be minus 4. 1 plus 3 will be equal to 4. 2 minus 2 will be equal to 0. Let this will be equal to Q. Therefore Q transpose equal to 0 minus 4, 4 and 0, which is equal to minus Q, which is equal to minus Q. Therefore Q is skew symmetric. Therefore Q is skew symmetric. Skew symmetric. Therefore A can be written as P plus Q into 1 by 2. So this is how one matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. एटा भी सिमिलर अच्छे. So एटा में आप लोग दे दो, एटा अपन ट्राई कर लो. ठीक है, सेम करो. Then write the inverse of this. Since A is equal to 1001. A equal to 1001. So A square will be, this is equal to I, and A square will be also equal to I. यदि A होची आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि A हेगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यार स्क्वायर मुझे कौन हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A square is also identity matrix. If A square is equal to A, if A square is equal to I, then A is an involuntary matrix. Then A is an involuntary matrix. For involuntary matrix, A will be equal to A inverse. A inverse, which is equal to the same 1001. Same like the right. 80 मतलब आसिबो same दिस. Same दिस मान. Let us consider this is equal to A. यदि एटा A हेगला, तो A square कौन हो? Since A square is A equal to I, therefore A square is also equal to I. If A square is equal to I, identity matrix na. If A square equal to I, then A is an
A is an involuntary matrix. A is an involuntary matrix. If A is an involuntary matrix, therefore A is equal to A transpose, and that is equal to again A. 1 0 0, 0 1 0, and 0 0 1. This is how to get the inverse of an identity matrix, and always remember the inverse of an identity matrix is always equal to the matrix itself. Next, ये बहुत important. Step to find the inverse of matrix by using elementary transformations. देखो गोटे मैट्रिक्स अच्छे भाव A equal to A11, A12, A13, sorry, A21, A21 और A22, 2 by 2 मैट्रिक्स यार इनवर्स बाहर कर रहा है, राइट? केमती बाहर करिए? स्टेप 1. Step 1. For any given matrix A, for any given matrix A, find determinant of A. If determinant of A equal to 0, then A inverse does not exist. यदि A रो determinant 0 होगा, A inverse exist करियो, and if determinant of A is not equal to 0, then A inverse exists. A inverse exists. This is step 1. Now come to step 2. यदि A inverse exists करियो, A into A inverse will be equal to I, which is also equal to A inverse into A. A into A inverse कौन होगा? I. Then step 3. Step 3, since A is equal to I into A, A is equal to I into A पाकर A मैट्रिक्स लिखिए into I जगह लिखिए 1 0 0 1, I जगह कौन लिखिए 1 0 0 1 into A जगह A मैट्रिक्स को वैल्यू जोटा क्वेश्चन दिया है तो सेटा ले. Now by using elementary transformations, कौन करिए? By using elementary transformations, by using elementary transformation, convert A वाला A to an identity matrix, to an identity matrix. A टाकू गोटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनवा चेष्टा करिए. जेमती जेमती ट्रांसफॉर्मेशन एटी यूज करथिए सेही ट्रांसफॉर्मेशन एटी मध्ये यूज होतो आइडेंटिटी मैट्रिक्स. द मोमेंट LHS becomes I, जो मोमेंट LHS टा I बन जो the changed matrix on RHS will give the value of A inverse. जो मोमेंट LHS कौन हेगला I हेगला माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स हेगला से मोमेंट राइट साइड जोटा चेंज हेगी बनथियो नुआटा सेटा तमर A इनवर्स वैल्यू हेगी. ठीक है. एबे हम देखिबा हाउ डू यू कन्वर्ट ए गिवन मैट्रिक्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Conversion of a given matrix to an identity matrix by using elementary row as well as column. एबे हम कोन करिया ना गोटे मैट्रिक्स दिया है हमको से मैट्रिक्स टा हमें केमती एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रे आइडेंटिटी बनेबा सेटा देख. let तो कौन लिखा है? steps to convert any given square matrix of order 2 cross 2 to an identity matrix. let A अच्छी तमरे आगे A2 2 by 2 मैट्रिक्स करिए then 3 by 3. A11 A11 A12 A21 and A2 एमती गोटे मैट्रिक्स राइट. तो स्टेप 1 रे कौन करिया मु आगे रो पूछता
कोडा को एलिमेंट ए एलिमेंट 1 करियो ए 1 1 टाकू हमें 1 करबा को चेष्टा करियो देन स्टेप 2 रे कोन करिया एटा 1 हेला पर याकू यूज करी एटा को 0 करियो ए 2 1 टाकू कोन करिया 0 करियो चेष्टा करियो यूजिंग ए 1 1 यूजिंग ए 1 1 ए 1 माने r1 रो r1 टाकू यूज करी एटा को हम 0 करियो चेष्टा करियो तब ए जो एलिमेंट ता याकू 1 करबा स्टेप 3 ए 2 2 1 बनेवा कौन केमती बनेवा मल्टीप्लाई करबा रेसिप्रोकल नंबर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल नंबर रेसिप्रोकल माने से टाइम रे सेठी जो एलिमेंट अछि तार रेसिप्रोकल नंबर मल्टीप्लाई करबा मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल नंबर देन स्टेप 4 कौन करबा एटा को 1 करबा a12 को 1 करबा यूजिंग r2 तो देखो स्टेप्स केमते हेगला मात्र कहि दउ तो ध्यान दे एटा हेगला 1 एटा करबा 1 याकू यूज करी याकू करबा 0 रेसिप्रोकल नंबर रे मल्टीप्लाई करी याकू करबा 1 याकू यूज करी याकू करबा 0 एटा हेगला एलिमेंट 4 नाउ विल सी एलिमेंटरी कॉलम रे कोन करबा कॉलम रे हम स्टेप 1 करबा एमते स्टेप 1 हम कोन करबा a11 टाकू 1 करबा a11 1 तो एठी 1 हेला याकू यूज करी याकू 0 करबा दैट इज a12 कोन करबा 0 यूजिंग a11 देन स्टेप 3 एटा हेगला 2 देन स्टेप 3 कोन करबा याकू 1 करबा a22 1 करबा मल्टीप्लाई करबा रेसिप्रोकल नंबर देन याकू 0 करबा a21 याकू 0 करबा यूजिंग a2 तो एटा केमते हेगला देखो यार स्टेप कोड केमते हेगला एटा को 1 करबा याकू यूज करके याकू 0 करबा रेसिप्रोकल रे मल्टीप्लाई करके याकू 1 करबा याकू यूज करी याकू 0 दिस इज बाय रो एंड दिस इज बाय कॉलम बुझिया these are the steps एबे देखियो हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जदी हो पहले कोन करू फॉर 3 क्रॉस 3 रो 3 क्रॉस 3 रो रे कोन करबा देखो फर्स्ट हमें मैट्रिक्स लिखता लेट a is equal to 1 a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एति हेला नाउ स्टेप 1 रे कोन करे एटा को 1 करे a11 टा को कोन करबा 1 नाउ स्टेप 2 रे कोन करे ए दुटा को 0 करबा a21 एंड a31 याकू करबा 0 यूजिंग step 1 using a11 then step 3 रे हम कोन करबा याकू 0 करबा चेष्टा करबा याकू 1 डायगोनल एलिमेंट को 1 करबा और डायगोनल एलिमेंट को 1 कला बेले मल्टीप्लाई करबा रेसिप्रोकल नंबर देन स्टेप 4 रे कोन करबा हम a नंबर और a नंबर माने a12 एंड a32 ए दुटा जाको कोन करबा 0 करबा यूजिंग a2 then step 5 a3 diagonal element याकू 1 करबा मल्टीप्लाई करबा रेसिप्रोकल नंबर then step 6 a13 and a23 याकू करबा 0 using a33 माने 81 हला याकू यूज करी दुटा 0 हे गेल कोनी रेसिप्रोकल रे मल्टीप्लाई हे कि ये 1 हे गेला याकू यूज करी ये 0 याकू यूज करी ये 0 मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल रे ये 1 हे गेला याकू यूज करी ये 0 हेगला then 3 by 3 column 3 by 3 column रे कोन हो फर्स्ट ये 1 याकू यूज करके ये दुटा 0 ये 1 याकू यूज करके ये 0 याकू यूज करके ये 0 देन ये 1 याकू यूज करके ये 0 याकू यूज करके ये 0 तो लिखवा हम स्टेप 1 फॉर 3 by 3 column
3/3 कॉलम रे कोन हो a11 टाको 1 करिया a11 2 1 this is step 1 then step 2 a12 and a13 both will become 0 using a11 then step 3 a22 1 करिया and while doing that multiply करिया reciprocal number then step 4 रे कोन करिया a21 and a23 तो 0 करिया हां a21 माने ये a23 माने ये ए दुईटा को 0 करिया using a22 then step 5 a33 को 1 करिया and step 6 a31 and a32 दुईटा जाको 0 करिया using a33 so by doing this एतकी कला है हमर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ता अछि हमर जो गिवन मैट्रिक्स ता अछि से हमर आइडेंटिटी बन जाय तो आ आइडेंटिटी बनि गला पर हमको जाना हम केमति तारा इनवर्स बाहर कर नाउ इट इज सब सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन अछि तो मु कोन करी गोटे क्वेश्चन करी आ गोटे क्वेश्चन आपन होमवर्क यदि मु एटा करी दिस आई विल डू एंड दिस आई विल गिव यू एज यदि कोन डिफरेंट टाइप रा आसले मु आपन हिंट दे सर लेट a इक्वल टू जेमते स्टेप्स हम मन रखछे समझ करिया लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 5 देखा हम कोन करिया हमें फर्स्ट स्टेप रे डिटरमिनेंट a करिया मु फर्स्ट स्टेप रे कोन करथि फर्स्ट स्टेप रे हम कोन करथि ना डिटरमिनेंट a बाहर करिया जति a 0 हैला a 0 हैगला इनवर्स एग्जिस्ट करिवन इफ does not 0 then a inverse exists देखिबा let us find determinant of a equal to 1 into 5 will be 5 3 into 2 equal to 6 एमती होती है 1 5 minus 6 equal to minus 1 which is not equal to 0 therefore a inverse exists a inverse exist करे जदि a inverse exist करला त हम कोन लिखबा कि a is equal to I into कोन लिखबा a equal to I into a since a is equal to I into left hand a रो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और a रो वैल्यू केतो अछि 1 2 3 5 दिस इज a I माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 1 0 0 1 देयर आर डायगोनल एलिमेंट 1 एंड रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0 याकू a एज इट इज नाउ एबे कोन करिया एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके याकू आइडेंटिटी बना ए जो मैट्रिक्स थी याकू आइडेंटिटी बना स्टेप्स को हम करते देखो स्टेप्स हम एमती करते जे फर्स्ट ये एलिमेंट को 1 करिए याकू यूज करके याकू 0 करिए रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके याकू 1 करिए याकू यूज करके याकू 0 राइट तो फर्स्ट एलिमेंट 1 अछि तो स्टेप 1 करिया दरकार तो याकू स्टेप 2 रे कोन करिए 3 टा को 0 करिए 3 टा कोन करिए 0 3 टा को हमें 0 करिया यूजिंग r1 हां तो देखो 3 कोठी अछि r2 एटा को 0 करिवार अछि एटा को यूज करिवार अछि सो सेठी 1 अछि तो सेठी 1 अछि ना माने ताकू 3 रे मल्टीप्लाई करियो इथि माइनस करियो तो r2 कोन 3 minus 3 into r1 तो r1 does not change तो ये 1 2 हेगला 3 minus 3 0 5 minus 6 हेगला minus 1 राइट साइड कोन हो r1 तो सेम रहियो 1 0 0 minus 3 will be 3 and 1 minus 3 into 0 1 minus 0 will be equal to 1 into 2 ठीक है तापर ए जो एलिमेंट अछि याकू 1 करिया केमतु 1 करिया देखो मल्टीप्लाई कर दवा रेसिप्रोकल नंबर तो r2 is r2 को कर -1 into r2 काहे ना -1 रेसिप्रोकल इज आल्सो -1 तो r1 तो सेम रहिला 1 2 और ये हेगला 0 1 and this is equal to ये हेगला 1 0 ये हेगला -3 -1 into a into कोन हेगला 8 एबे कोन करबा ये 1 हेगला 0 हेगला 1 याकू 0 करियो से ये कोथि अछि r1 r2 रे कोन अछि 1 अछि r2 को 2 रे मल्टीप्लाई करिकि r1 रो माइनस कर दो तो 1 minus 0 हेगला 1 0 0 1 and this is equal to r2 को 2 रे मल्टीप्लाई कर तो 1 minus of -6 -2 into -3 कता हैला -6 हेगला 1 minus 6 will be equal to -5 plus 5 देखो ध्यान दे देखो एटा हेगला 0
-3 तो ये -3 है हाँ तो ये -3 है गला -1 रे मल्टीप्लाई कला पर ये प्लस है हाँ तो r1 माने 1 1 -6 कौन है गला -5 1 -6 है गला -5 and 0 -2 into -1 will be equal to +2 and this is 3 and this is -1 into a so this is I is equal to -5 2 3 -1 into a normally I equal to कौन हो जाए I equal to a inverse into a ना so this will be the value of a inverse therefore a inverse equal to -5 2 3 and -1 this is your answer అలాగే এটা টিকে টিপিकल हां रो ध्यान से सॉल्व कर चल आ गोटे क्वेश्चन करिया एटा करो एटा हम करिया ए एटा को हम रखा एज होमवर्क लेट a will be equal to 4 -2 3 1 therefore determinant of a equal 4 into 1 is 4 minus of minus plus 3 into 2 will be 6 10 which is not equal to 0 therefore a inverse exists since a is equal to I into a जगह कौन लिखा 4 minus 2 3 and 1 this is a equal to I माने identity of 2 by 2 this into a ठीक है अब एटा को 1 करिए अगर एटा को 1 तो r1 minus r2 कर r1 is r1 minus r2 4 minus 3 है 1 minus 2 minus 1 will be minus 3 and this is 3y and this is equal to 1 minus 0 r1 minus r2 करेगा 1 minus 0 0 minus 1 and 0 y and this into अब क्या करिए याकू 0 करिए and this is r2 r1 रे कौन अछि 1 अछि तो r2 minus 3 r1 so this is 1 minus 3 3 minus 3 is 0 1 minus 3 into minus 3 will be plus 3 1 plus 3 into 3 will be 9 1 plus 9 will be equal to 10 and this is equal to 1 minus 1 this is 0 minus 3 will be minus 3 1 minus 3 into minus 1 will be plus 3 and 1 plus 3 will be equal to 4 and this into 8 now याकू 0 1 करिए अच्छा तो r2 is r2 कौन करिए r2 को 1 by 10 into r2 so this is 1 minus 3 0 1 ठीक है and this is equal to 1 minus 1 minus 3 by 10 and 4 by 10 into 8 now r1 को 0 कर रहा है r1 को केमती 0 करेगा so this is r1 plus 3 r2 minus 3 plus 3 कौन है 0 है so कौन देखो so this is 1 this is 0 this is 0 this is 1 and this is equal to r1 माने 1 r1 देखो 1 plus 3 into minus 3 by 10 so 10 minus 9 10 minus 9 will be equal to 1 by 10 1 by 10 next r1 is minus 1 plus 3 into 4 by 10 minus 10 plus 12 minus 10 plus 12 will be 2 by 10 and the remaining two are minus 3 by 10 and 4 by 10 into 8 so this is I equal to a inverse into a equal to a inverse into a therefore a inverse is equal to 1 by 10 2 by 10 minus 3 by 10 and 4 by 10 this is your a inverse बुझिए minus 4 by 10 1 by 10 तक आगे को नहीं की भी लिख करिए 1 by 10 into 1 2 minus 3 and 4 ठीक है एटा हो जाए आंसर तो एटा आपन होमवर्क करिए सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन था एटा आपन होमवर्क आगे कौन करिए या इधर इंटरचेंज कर देबे r1 इंटरचेंज विथ r कर देला r1 तो ऊपर पड़े r1 तो तळ पड़े r1 तो ऊपर पड़ेला माने 81 हेगला 82 हेगला तापर 0 करी सॉल्व और r1 माइनस r2 करके भी सॉल्व करते ए दुटा रे कोटा करिया फिफ्थ रा करिया सिक्स्थ रा होमवर्क करियो सिक्स्थ विल बी योर होमवर्क एंड फिफ्थ आई विल डू let a is equal to 1 0 2 minus eta a
Therefore, determinant of A equal to minus 3 minus 0 equal to minus 3, which is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. A inverse exists. And since A is equal to I into A जगह A रा value लिखो 102 minus 3. This is A. I into A. I माने 1001 and A. What is A? A is equal to A. A को A रखो. It 1 अच्छी already किसी करियर 2 डाको 0 करो. तो R2 अच्छी R2 equal to R2 minus 2 R1. R2 will be equal to R2 minus 2 R1. So R1 is 10 as it is. Chhad dile. 2 minus 2 will be 0. Minus 3 minus 0 is again minus 3. Okay? And this is equal to R1 is 10 and R2 is 0 minus 2 will be minus 2 and 1 minus 0 will be equal to 1 and into A. 1 0 8 1 करें तो R2 is minus 1 by 3 into R. यार रेसिप्रोकल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो into R2. तो ये अगला 1 0 और ये अगला 0 1 equal to this is 1 0 minus 2 into minus 1 by 3 will be 2 by 3. 1 into minus 1 by 3 will be equal to minus 1 into A. Now 1 0 0 1 सब 1 0 0 1. So this is I equal to A inverse into A. Therefore A inverse equal to 1 0 2 by 3 and minus 1 by 3. This is your answer. अब 6th step नीचे